more time. But before signing off, I would like to thank Mr. Praveen Chandra, General Manager Taj Lands End, my home away from home, for being such a warm and welcoming host. Neeta, Aditi, thank you for the stranger in me. We all look forward to the next logical step, seeing it being turned into a film. Nawazuddin Siddiqui, sir, I hope you shall be part of the film when it happens. Thank you all for being a wonderful audience, and do not forget to pick up a copy and get it signed by the co authors. Have a great evening, ladies and gentlemen. Thank you, Ajay. Do take a seat. They've mentioned how you would like Nawaz to do the film. I hope your signing check is ready. He's become a very expensive actor now. I love it. All right. Yeah, lovely breezy evening today. So before I call these co-authors on stage, I want to also talk to you about a lady who has been a friend in the media industry, and I can't say that often to too many people. 6 or 7 years back, she'd started this. Actually, we'd started this entire. A lot of you all were part of the world, where suddenly we started doing promotions for films. You had trailer launches and you had music launches. And I remember her planning everything very meticulously when she was starting things off all alone, Neeta Shah, setting things up, I think it was Grand Masti we started with. And then it just carried on and on and on and on. And then I started seeing her name with such fantastically large films. The name, Pulp Fiction, Quentin Tarantino was very close to me. So when she'd chosen that name also, I found it exciting. I've heard a synopsis of the book, and it really should be made into a film. And with the likes of Aditi, who's written my two favorite films, and I'm sure that you all will agree, Once Upon a Time Mumbai and Dirty Picture, what writing in that film. So I'm going to call these very, very accomplished ladies. It's a real privilege and honor to call them on stage and actually take it away. Big ladies and gentlemen, big round of applause for our two co-authors. Have a seat. And while you walk, Aditi, of course, not used to wanting to stay in the limelight too much, so there she is with her bag as well. But I will actually say this. I'm going to let them speak quite a bit on this. Neeta, you have always got used to even deciding what speech the anchor should say, except for me. I think she has that always written down. But just the thought that went into The Stranger and Me, how the two of you met together. And as he said, the script already looks very exciting to make a film out of. So let's have that. Thank you, Salil, for your kind words. So I would like to begin telling you all that the book is based on the concept of parallel life. Now, parallel life is a very intriguing concept. I had never heard of it. And the first time that Aditi told me, I thought, let me do some research on it. And I found it so interesting that we decided to pen a story with the underlining of parallel life. So just to tell you what parallel life is, according to the theory, each one of us have multiple options at every stage in life. And when we choose one option and we let go of the other option, the parallel life begins. So to give you an example, I'm a chartered accountant. And when I left working as a tax consultant and I started working in the Hindi film industry as marketing, I had a tough choice to make. Leave a job, start something on my own. So when I chose one over the other, the theory states that there is another Neeta in the parallel world who's still continuing as a CA, and her life has taken different twists and turns, while my life is here for all of you all to see. So the theory states the minute you choose one option over the other, your life and your destiny completely changes. So that's the underlining of the book. That's why I hate Google Maps. Now we don't have an option at all. I have to go straight and take a right only. We can't make this other choice in our lives. But you have been part of two fantastic films. You're writing films, it seems a lot easier, it seems. More people are involved. But this is her very first book. Correct me if I'm wrong. It's your very first book that you're co-authoring. How is she to work with, by the way? Neeta. She's mostly nice. Yeah, just put the mic up. Yeah. Mostly. Yeah. Yeah, she's mostly nice. Yeah. And she gave me lots of coffee. Lots to of get- coffee? Yeah, to make me write faster. Yeah. And better. So that obviously she's like a warden. Jaldi likho, I have a deadline to No, give she's- because he wants one. She's more like, have some coffee, jaldi likho. But it looks like it's come together really well because she was giving we obviously have more chat about the book, which is going to be there. But are you happy with the final product, or were they 20, 30 that was, how we see in the films, na? ऐसे उठा के फेंक के dustbin में डाल दिया. Was that happening a lot? Yeah, I mean, I don't think anyone can be completely happy with the final product ever, Yeah. but I'm happy. Brilliant. So
Well, they're happy, so big round of applause for that, for writers to get happy. But we are also happier because Neeta has another announcement for a gentleman that all of us just go like that with his talent, yaar. भर भर के भगवान ने दिया है. So we have a very special guest of honor, and I would like to welcome on stage Mr. Nawazuddin Siddiqui. And we are really honored, sir, that you agreed to come and launch this book for us. Nawaz, why don't you all have a seat? आप लोग बैठ जाओ, all of you all, and while they take a picture, मैं अपने लिए चेयर नहीं रखता हूँ, मैं सिर्फ खड़े होकर सवाल करेगा. वापस खड़े होके वापस क्वेश्चन वो फोटोग्राफ्स लेने हैं. कहीं जाना तो नहीं है ना किसी को? नहीं जाना है. अच्छा तो एक खड़े होके अभी पिक्चर लेना है क्या? काफी busy ओके लेट्स ऑल वी आई एम अनवीलिंग अ बुक है. रुक जाइए थोड़ा. सो we'll chat a little bit. Nawaz bhai, lots of questions, and I say this, because I have so much respect for this man. He has basically single-handedly, if there was a Shah Rukh Khan in the 1990s who made individuals think that they could come to Mumbai, this gentleman with his pure acting talent is the reason why so many people are ready to come to Mumbai. So a big round of applause, and I know everyone agrees with that. He's the reason why talent has a name and place in Mumbai. Thank you so much, Nawaz bhai, for doing this for us. लेकिन जैसे कि इन्होंने किताब में लिखा है, हर किसी की लाइफ में there are two choices. आप लेफ्ट या राइट ले सकते हो, लेफ्ट और राइट से लाइफ चेंज हो जाती है. आपकी लाइफ में भी कितने सारे चॉइसेस थे, आप सिखाते भी थे एक्टिंग, आप इतनी सारी चीजें करते थे, लेकिन वो समय था जॉन मैथ्यू मथान से लेकर अनुराग कश्यप से लेकर अब इतने सारे चॉइसेस लाइफ में रहे. कई सेकंड के सपने आपको किया आपने, ये वंडर्ड कि क्या मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? शुरू में जैसे बहुत सारे ऑप्शन थे मेरे पास भी कि लाइक मैंने काम भी किया उनके ऊपर. लाइक केमिस्ट भी था, मैं चीफ केमिस्ट था वहाँ पे बड़ौदा केमिकल फैक्ट्री में. और उससे पहले एक ये नोएडा में टॉयस फैक्ट्री थी, वहाँ पे वॉचमैन का काम भी किया मैंने. तो जब मैं केमिस्ट था तो मेरे सामने ये था कि यार अगर मैं इसमें मैं पैशनेट नहीं था उस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन किया था केमिस्ट्री में था, केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया था मैंने. तो मैंने सोचा चलो ये करता हूँ, लेकिन पैशनेट नहीं था मैं. अभी जब मैं आवारा घूमा उसके बाद काम सारे छोड़ के काफ़ी टाइम तक मैं आवारा घूमता रहा, एक दो साल तक. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए. उसी बीच में मैंने थिएटर वेटर भी देखा. तब मैंने सोचा कि अब यही करूँगा मैं. ये एक्चुअली इसमें मैं अपने आप को देख सकता हूँ. तो जैसे अभी नीता ने भी बताया कि अगर मैं भी ये सोच रहा था कि अगर मैं केमिस्ट होता तो ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटी सी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री खोल लेता मैं, तो उसका वो हो जाता. मैं भी आई डोंट नो क्या वो चीज़ें रहती. लेकिन मुझे लगता है कि ऑप्शंस आपके पास, हर इंसान के पास कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर होता है. अगर उसमें आपकी स्किल और आपका डेडिकेशन, पैशन देखा जाता है, वही ऑप्शन आपके लिए आई थिंक वही आपको आगे ले जाता है. उसी उसमें आपको सक्सेस मिलती है आई थिंक. बहुत सारे लोग लेकिन ऐसे कुछ ज्यादा ही सपने लेके मुंबई आ जाते हैं ना. हर किसी को लगता है कि उनकी लाइफ में शाहरुख खान की जगह से हटके आपका नाम आ चुका है ना. लॉट ऑफ देम थिंक कि आपको बन जाएंगे, बस सैक्रिफाइस जितना करना पड़ता है. और बहुत सारी टाइम्स ऐसा लगा, क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ऐसा लगा भैया बैग एंड बिस्तरा बोरी बांध के निकल लेते हैं? ऐसा कभी लाइफ में आया मोमेंट आपका? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, कई बार हुआ ऐसा कि मुझे लगा कि अब कुछ होने वाले नहीं है, चले जाते हैं. लेकिन मेरे सामने, सच बताऊँ, मेरे सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं पैशनेट था इस चीज़ के लिए. हम 4-5 दोस्त थे यहाँ पे, तो सुबह शाम सोने से पहले और सुबह उठते ही हम लोगों का सिर्फ एक ही डिस्कशन होता, एक्टिंग के बारे में ही बातें करते थे हम लोग, सिर्फ एक्टिंग. मतलब आई थिंक मेरी लाइफ में कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जब से मैंने थिएटर स्टार्ट किया था और आज तक, कि हमने किसी परफॉर्मेंस के बारे में, एक्टिंग के बारे में बात ना की हो. 24 जब से 30 साल से कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. तो कई बार ये मेरे सामने आया कि काम नहीं मिल रहा, चलो चले जाते हैं वापस. बट ये होता था कि मैं क्या करूँगा, मेरे से तो कुछ दूसरी चीज़ आती भी नहीं है. तो फिर यही सोच कर रह जाते थे. और थोड़ा शर्म आती थी जाते हुए. लोग बोलेंगे भाई अच्छा गए थे हीरो बनने हैं, वापस आके खाली हाथ. नहीं, अभी तो सब बोलते हैं. मेरे साथ इनकी बचपन की फोटो पड़ी हुई, सी माय सेल्फी विद हिम. नीता वीरा, whenever I look at you, I think of a triumph of marketing. There were very few people at that point of time. One Karan Johar was there who sort of understood marketing, I remember, and he used to explain a lot of things to me. And I met you as an independent at that point of time. And same time, around 2012, when Student of the Year was also being launched, a lot of options were there in front of you to not do this. And I remember we used to have discussions also as to how you'd make cold calls to a lot of, say, a director or a film. So your life also had so many choices कि मैं भी बोरी बिस्तरा बंद करके
I go back to counting money, which you are doing now also, but yeah, that time it was as a chartered accountant. The only person who we work for free for is Neeta Shah. We have to give this to you. We all work. But Neeta, you could have moved out also, you know, so much has happened in the last 7 years in the film marketing world also, you know, so just a little about that as well. So initially, when I joined the industry, I really didn't know how to start, you know, because I didn't have a godfather in the industry. I didn't have any guidance. I remember that time, a friend of mine, Siddharth Jain, he was heading iRock, and they were producing films. The first film was Ragini MMS, the first one that became a cult film was produced there. So he was a friend, and he knew that I always wanted to get into this field. So I started working with him. And I took a lot of experience on various things in a production house that you would get. And finally, I realized that marketing is something which I really love doing. But like you said, in 2012, it was very niche. Matlab, itna kuch nahi hota tha. You know, just few things here and there. And then I was lucky when I independently wanted to do something. Mr. Ashok Takeria, who had made Grand Masti 2, Maruti International, he gave me a chance to come and market Grand Masti. And I learned a lot on that film. We worked, I mean, I was totally independent. Like you said, I made a lot of cold calls, whether it is to brands or to producers, to directors, because there was nothing so organized at that point in time. Luckily for me, that film, I mean, of course, there were a lot of other factors, but it became a cult film. It became, I think, 110 crore worldwide. crore, yeah. So since then, there was no looking back. Of course, there are times when, you know, things don't go your way, and that happens in every film. I mean, in every field, be it acting, be it a corporate world. So there are a lot of times where you get depressed, you know, and you feel कि अभी क्या होगा. There are thoughts to leave it, but then the love for the industry, and I think I have the unconditional support of my brother and my mom. Like they keep telling me, especially my brother, that it will happen, you know. So I think that is the support and the belief I have that keeps me Sitting going right here on. in front, right here in front. Of course, he's sitting in one corner so that he can't be seen, but yeah. Yeah, he's very shy. Which is amazing, actually, you know, when they sit and support somebody over there. But marketing a book is very different. And, you know, the plan that you had, even writing, you know, it's a lot of people can direct, a lot of people can act, a lot of people can actually do a lot of things. But writing a book, then wanting to think about marketing it, that's a whole new ball game. So a little bit about that as far as your talent is concerned there as well. So writing was always a passion. My full-time job is marketing, so I don't get so much of time. But yes, on the weekends, whenever I feel like I do write. My first book had come out in 2012, and that time also it had become a bestseller because it was about Bollywood. Somewhere in all my books, even this book, you know, Bollywood is there. Somewhere or the other, because I'm living in this industry. So I get inspired by a lot of things. So that's always a part of the book. So yeah, but it's just a stress buster for me, writing. Makes sense. And a stress buster for you. If I have gentlemen like you, it really makes it cool. A lot of my friends tell me, I'll tell you why. A lot of my friends tell me we write a lot of things. कोई publisher ही नहीं है. Publisher बोलता है इसे change कर दो. It's like a lot of producers. You go with one script और इनमें जो बनती है वो बहुत अलग picture होती है. So you know, Ajay, you know what do you like about the book that you suddenly said, okay, fine, let's like take this worldwide, yeah? You know, we all know it's about parallel life. So when the book came to us, you know, and we have a friend here, Mr. Osager, who introduced us for this book. So it's not just parallel life, it's also about human experiences, you know. You know, be it your love or whether it's a thing on corporate life or whatever, you know, it's just like so many aspects of life is also been told in this particular book. So what struck us was the parallel life, because that's what, you know, I haven't read myself right now any book out of the Indian author writings, you know. So we have a panel of editorial discussions for every book when we get the book. Like in a month, most of the publishers get around a couple of hundred manuscripts. And trust me. Listen, tell me, do you really pick up and throw in a dustbin as they show? I'll tell you, the first thing we see in any manuscript is the first page. And trust me, the first page is a decider, whether we want to go ahead or not. But that's like, remember the college days when you used to write really good stuff on the first page, उसके बाद भरते रहो जो भी भरना Yeah, है. so perhaps the experiences come from there. Yeah. So the whole process is like, you know, there quite a few editors in-house, they read the book, and then we do discussion once we approve the first level. So her book came into different levels, and then I think we took a bit of time, and we had a lot of discussions over the book. We did some changes over the entire narration. I think throughout there has been around 12 drafts of this book.
Yeah, but He's a hard taskmaster, No, yeah. but that's pretty normal because end of the day it's for the book. It's for the author, you know. So that's very, very important to handle the book with care. Yeah. So we were given a great team of editors who would work with us and who know the pulse of the market, because probably somewhere we write it as a Hindi film story, but for a book it needs to be a little different. Were you finding it tough to sort of give those redrafts, or you're so used to it? I'm so used to it. Yeah? Yeah. So tell me how easy it is it to write a book as compared to screenplay? It's different. I mean, sorry. It's different. A screenplay is more about what you can show. With a book, you can do a lot of exposition in a way that it sounds nice. In a film, if you do exposition, it doesn't really work that well. So it's different. You can indulge yourself, the writer, and you a lot more with a book. And there's no budget constraint, no. And there's no You budget can make anybody constraint. fly if you want. Yeah. Which is the biggest problem with the film. Okay, you know what I'm going to do is I'm going to get these fantastic books up. So I'll give the photo op for before we open out to the audiences. Salil, I would like to call some Yeah. people on stage. Yes. Any questions? Now, this is one of those times where you have to just generally ask a question just to get things rolling, right? नवाज I've asked everything. All done. You really want to go fast, huh? एक सवाल है सलील है Yeah. Ajay. नवाज अमित है आपने चूंकि कुछ फिल्में की हैं जो बुक्स पे बेस्ड रही अडेप्टेशन के लिए इस बुक में कितनी आप देखते हैं पोटेंशियल कि ये मतलब फिल्म के लायक है या और कौन सी किताबें ऐसी होती हैं जो अडेप्टेशन के लायक मतलब होनी चाहिए ये तो डिपेंड करता है कि सी क्या होता है कि लाइक स्क्रीन प्ले राइटर्स जो है ना जो कभी कभी क्या होता है ट्रांसलेशन होता है कभी कभी अडेप्ट करना पड़ता है बुक से आई थिंक बुक में बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है या तो उसके ऊपर सीरीज बनाई जाए अगर फिल्म बनाई जाए तो वो इंसिडेंट लेने पड़ेंगे कि जो इसमें स्पेसिफिक एक ख़ास इंसिडेंट है जो एक स्टोरी को डेवलप करते हों तो डिपेंड करता है और आई थिंक
जैसे नीता ने भी बताया कि फिल्म के लिए इसमें बहुत ख़ास एलिमेंट हैं जो स्क्रीन प्ले के लिए होते हैं, वो बहुत ही अच्छे एलिमेंट्स हैं इसमें, ट्विस्ट बहुत हैं इसमें, और एक कनेक्शन है एक इंसान के इनर का, तो आई थिंक बहुत ही पॉसिबिलिटीज़ है इसमें कि इसको अडेप्ट करके इसके ऊपर फिल्म लिखी जाए, तो बहुत चांसेस हैं इस बुक को लेके। एक सवाल नीता से था, नीता है कि एक टर्म होता है मैजिकल रियलिज्म, मतलब लिटरेचर में, ठीक है, और आपने यहाँ यूज़ किया है पैरेलल लाइफ ना, तो मतलब दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मतलब मैजिकल रियलिज्म क्या है, उसका वर्ल्ड क्या है, एंड पैरेलल लाइफ जो मतलब आप कर रही हैं? सो पैरेलल लाइफ इज़ एक्चुअली अ थ्योरी जो एग्जिस्ट करती है। अगर आप गूगल करेंगे तो इस पे बहुत सारे केसेस हैं, रियल लाइफ केसेस, where it is very uncanny resemblance to parallel life. I mean, the classic story online is, if you Google, is Abraham Lincoln and John F. Kennedy. They actually had something called as parallel life, differentiating between them. So that is a theory which is believed to be true, कि हर एक इंसान के मल्टीपल पैरेलल लाइव्स होते हैं। जब आप एक डिसीजन लेते हो, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है उस डिसीजन के कारण, एंड जो डिसीजन जो चॉइस आपने छोड़ा है उसके हिसाब से आपकी पैरेलल लाइफ शुरू हो जाती है। while you are talking about magical realism, that is just fiction, there's no theory as such which exists in real life. So हमको जो excite हुआ था that this particular theory, no one has ever attempted a book or a film in the Hindi film industry, but it's a very interesting theory. Hi, good evening. Yeah, On the left. yeah. Neeta, Yeah. the cover has a lot of resemblance to Tiger Shroff. Yeah, that's one point. And how much of a fiction element is there, and how much of an inspiration mode is there in your book? Will it rake up a lot of gossip avenues to the book? So it has nothing to do with Tiger Shroff. It is Tiger has a stronger beard, doesn't he? इसमें ऐसा ही है क्या? I think he looks more like Vicky Kaushal, if you actually see. Right? No, this is just a stock image that we took. So just to answer your question, the book is completely fictionized. But of course, as a writer, a lot of inspiration I have taken from Bollywood, but not from actors, but from instances, which has happened. So the main protagonist of my book is Amit. Amit is 60 years old today. The book goes a lot into flashback and current situation. He made a choice 40 years ago, and how that choice changed his whole life completely. And when he comes back to that point, and if he chooses another choice, what happens to his life is a story. Okay. And So how the book that you see, the backdrop is Bombay, not Mumbai. Bombay, that was in 1970, which is totally different from Mumbai, which is today. how easy or difficult is it to co-write or co-author a book? What were the kind of responsibilities you all had within you? Because if you have a team of people writing a web series, you have people writing certain characters or certain instances or certain flows. So what was the kind of magic or the bond you all had for co-authoring this book? So Aditi primarily is a friend. We started working together, that's different. So the concept came actually from her. She told me about this concept, and when we researched, we thought it was very interesting. Together we ideated on the characters, and of course, we had a great rapport working together. Of course, there were a lot of fights. I mean, any two people working together, you're going to just pull each other's hair out, but then we would come back to normal. And so yeah, there are ups and downs, but we managed to finally publish it. Any more questions? I don't think there are any questions. Before we give the vote of thanks, while we give it, we're going to call a few more people on stage as well also. So we have a nice photo op, and then Neeta will give the vote of thanks. Some great supporting people who have always supported Neeta, and one of the most fantastic gentlemen and musicians that is there in our world today and has been there for very, very long. Suleiman, sir, I'd like to call you. Can you please come on stage, sir? I can't see.
Anyway, a lot more people to thank also, so I'm going to leave that. Neeta, you want to give a vote of thanks? Or you want to call anybody else? Yeah, yeah. Sorry, there's a long list. I had to write it down. So first and foremost, I believe a lot in Sai Baba, and I think it's because of his blessings I'm here today. So my first thanks goes to him. Wherever he is, he keeps protecting us. My mother and my brother, Bharat, for their unconditional love and support. Aditi, for bearing with me and completing the book with me. Mr. Ajay Mago, Om Books International, for believing in the subject, supporting us, and agreeing to publish in one go. Chief Editor Deepa Chaudhary, she's not here, unfortunately. Head of Marketing and PR Communication, Alim Siddiqui, thank you so much for helping us with the event. Taj Lands Ends for being the hospitality partner. Mr. Parveen Chandar, General Manager Taj. Mr. Neville, thank you so much. Mr. Astad Vadia, Director of Sales and Marketing. Pooja Bhosle. Head of Corporate Communications, Raymond Group, Rohit Khanna. Thank you, sir, for making this happen. Color Plus as styling partner. Sheetal, Head of Marketing, Color Plus. I can't see her, she's somewhere here. PVR as official exclusive multiplex partner. A big thank you to Ajay Bijli, Sanjeev Bijli, Shalu Sabrawal, and Heet Savla. So this is a vote of thanks. We can clap while we're doing this. We're almost at the end, yeah? Nice. I'm sorry, it's a long list. Yeah, it's fine. It takes a lot of people to get a book together. Get an event together. Yeah. Fever 104 FM as the official radio partner. Beverage partner, Indiosa and Ballantyne. That's the ones at the back, which is going to be open for after this. Iche. Media One Solutions team, Sorin Datta, Anand Srivastav, Himanshu Shinde. Lay Innovens team, who put the entire production here together. Vijay Pereira, Hyson, and Akhil, thank you so much. All my friends and family and the media people who removed the precious time to be a part of my big day. A big thank you to all of you. And finally, Mr. Nawazuddin Siddiqui, sir, thank you so much for gracing the event with your presence. Thank you, everybody, for coming for the event. One more, sorry. Yes. Amazon India, who's our online book partner and who's really helping pushing the book on Amazon. Thank you. Thank you so much, gentlemen. Thank you, Nawaz sir. Thank you so much. Thank you, Ajay. Thank you, gentlemen. Thank you, Aditi. Thank you, Neeta. And like we said, ladies and gentlemen, it's not the end of the night. Now you can take a U-turn and go all the way to the back. That's a far more exciting venture. Unless there are any more questions, I think we're done for the night. One more. Yes. The great anchor that we have, Salil yes. Acharya, who kept all of us entertained throughout the evening. Thank you so much. Funnest, shortest event ever. Best part. Thank you so much, ladies and gentlemen. I think we're done over here. Thank you, Nawaz sir. Thank you very much for coming on time. बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं बोलते हैं कि मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ आप दूर से ही आओ और टाइम पे पहुंच गए थे ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए थैंक यू गाइस
लुक सेंटर रखिएगा. ओके, रेडी? ओके. सो नवाज सर, आपसे पहले तो जानना चाहेंगे, आप बुक लॉन्च पे आए, क्या चीज़ ऐसी थी जो आपको यहाँ तक ले आई इस बुक में, या फिर आपकी दोस्ती थी? उससे भी ज़्यादा ऑफकोर्स जो बुक का जो मटेरियल है वो था, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत पहले बुक दी थी और मैंने पढ़ी थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक थी. आई थॉट कि इसमें मैं किसी भी तरीके से अगर मैं पार्ट हो सकता हूँ इस बुक का, इस इवेंट का, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी. तो यही वजह थी. जो सबसे बड़ी यूएसपी है ये बुक, और डेफिनेटली नीता और अदिति हम मेरी फ्रेंड्स रही हैं पहले से भी. तो इससे बड़ा अच्छी बात क्या हो सकती है कि बुक में जो वो वर्थ है, और मुझे प्राउड है दोनों पे कि उन्होंने विदाउट एनी कंप्रोमाइज़ उसको उस लेवल पे लेके आई हैं बुक को. और जो बहुत कनेक्शन महसूस होता है इस बुक के साथ, क्योंकि हर एक आदमी की लाइफ में एक इनर चलता है, तो वो इनर के सामने कई ऑप्शन होते हैं, और डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन लेते हैं, और वो डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल के ऊपर, आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो इसीलिए मेरा मन किया कि भाई मैं इसका एक पार्ट होना मेरे लिए ज़रूरी है. जैसे कि इस बुक का टाइटल है द स्ट्रेंजर इन मी, तो कभी ऐसा अब की बुक पढ़ने के बाद या इसका कवर देखने के बाद ऐसा आपको लगा कि जिस तरह ये किरदार आपने निभाया कि आपको इस बुक के ऊपर फिल्म करनी चाहिए, जब से आप इस इवेंट में आए? ऑफकोर्स इस बुक के ऊपर फिल्म होनी चाहिए, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही इनर, अब जिस तरह के मैं कैरेक्टर करता भी हूँ, और वो भी है उसमें एक इनर वर्ल्ड है उनका, जो थ्रू आउट द नॉवल कैरी करता है ना. एक इनर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है इस बुक में उसका. तो और एट द सेम टाइम जैसे एक पेस बहुत अच्छा है इस फिल्म का, फास्ट पेस है इस बुक का. तो बहुत सारे चांसेस हैं इस बुक के, जो इजीली आप फिल्म के लिए अडेप्ट कर सकते हैं इसको. नीता एंड अदिति, आप दोनों से जानना चाहेंगे, जो बुक है उसका टाइटल अगर डिस्क्राइब कर सके ऑडियंस को, और एक्सेप्ट नवाज, बिकॉज वो यहाँ है तो आप बहुत इजीली उनका नाम ले लेंगी. अगर नहीं, मेरे अलावा इस बुक पर नाम बने, पिक्चर बने, तो कौन सा नाम होगा जो आप लेना चाहेंगे? किस हीरो को, किस विलन को लेना चाहेंगे जो हमारे बहुत सारे बॉलीवुड? Okay, so the title है Stranger in Me. So जो ये बुक के किरदार है, इसमें 4 प्रोटैगनिस्ट हैं, और जब पैरेलल लाइफ, वो पैरेलल लाइफ को फेस करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, हर एक किरदार के सामने 2 चॉइसेस होते हैं, और जब वो एक चॉइस को लेके दूसरा चॉइस जाने देता है, उसका पैरेलल लाइफ शुरू हो जाता है, और उसे पता भी नहीं होता कि उसका पैरेलल लाइफ शुरू हो चुका है, और अगर वो चॉइस लेता तो उसकी लाइफ में क्या होता. So that's why he is a stranger to himself. So हमारे सबके अंदर there is that one stranger who we do not know completely. As far as the movie is concerned, I think it's important first to develop the script on the book and then take a call कि इसमें casting कौन होगा, rather than doing vice versa. पहले script तो पूरी develop हो जाए. Okay, नवाज, खबरें कुछ इस बुक के टॉपिक से थोड़ा अलग है. खबरें इस तरीके से आ रही है कि आप क्रिश 4 कर रहे हैं. क्या कर रहा हूँ? क्रिश 4 फिल्म कर रहे हैं, तो कितनी सच्चाई है इस खबरों में? मुझे तो आप ही से सुना है मैंने. इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और मैंने आप ही से पहली बार सुना है कि मैं क्रिश 4 कर रहा हूँ. I would like to mention one thing to the first question that you asked. The reason why I wanted Nawaz sir to launch this book is because his own life is so inspirational, from where he started to where he is now with the whole international acclaim. I think it's very, very inspiring for anyone who wants to achieve in any field. So I think he was a perfect inspiration. So my first choice, like we talk about choices in life, my first and only choice was Nawaz sir. So I requested him कि I'm very inspired by your entire journey, and it would be an honor for us for him to launch the book, and he gracefully agreed. नवाज सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि जैसे इस बुक की मूवी बनेगी तो आपने बोला मैं इसमें किरदार निभाऊंगा, तो बॉलीवुड में से कौन नहीं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है मुझसे निभाएंगे ये किरदार या नहीं. So I want to tell you the characters are very, very complex. जब आप बुक पढ़ेंगे, you know, you will realize the complexity of the character, and only a versatile actor like sir can carry that off, because you need to be very versatile. It's a very complex role. See, easy role तो कोई भी actor कर सकता है, you know, but it's a complexity that someone needs to act out, and I think sir has done all kinds of roles. Like we all have witnessed his films.
सर आपसे जानना चाहेंगे बॉलीवुड में से कौन सी एक्ट्रेस रहेगी जिसे आप चाहेंगे कि इस मूवी में आपके साथ काम करे, अगर एक आप मेरे से वो सवाल करें जो प्रोड्यूसर से किए जाते हैं। मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं नहीं रहूँगा इस फिल्म का प्रोड्यूसर, बट क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जब होगा तब वो उसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे। जैसे नीता ने भी बताया, अदिति भी जिक्र कर रही हैं इस के जो कैरेक्टर, जिस तरीके से जो नावल है, जिस तरीके से शुरू होता है, उसकी बिगनिंग मिडिल एंड है, वो डिपेंड करता है जो इसको अडॉप्ट करेगा। जिस तरीके से उसमें मटेरियल बहुत है। अब फिल्म मेकर क्या होते हैं, उसमें से फिर अपने तरीके से जिस जॉन की उनको जिस तरह की उनको फिल्म बनानी है तो वो मटेरियल उसमें से लेते हैं। कभी कभी ऐसा तो एज इट इज़ भी करते हैं उसको, जैसे चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एज इट इज़। जैसे आपने अगर ब्लैक फ्राइडे देखी हो तो ब्लैक फ्राइडे में चैप्टर्स हैं। अभी जैसे हमने एक बुक के ऊपर की थी, वो सेक्रेट गेम जो किया हमने, उसमें से बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐड भी किया, कुछ कैरेक्टर्स नहीं थे, कुछ ऐड किए, कुछ इम्प्रोवाइज़ किया, तो बहुत सारा मटेरियल, इतनी बड़ी बुक है सेक्रेट गेम की, तो उसमें से हमें क्या लेना है क्या नहीं, या एज इट इज़ करना है, तो वो डिपेंड करता है जब आप करने पे आते हैं। जैसा कि नीता ने कहा कि आप बहुत ही वर्सेटाइल है और इस इंडस्ट्री से नहीं है, इसी तरीके से कंगना भी इस इंडस्ट्री से नहीं, और इन मुद्दों को उठाकर वो काफ़ी चीज़ खुलकर बोलती हैं कि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ, लेकिन जो स्टार्स के बच्चे होते हैं उन्हें बहुत मौका मिलता है, और जो न्यू कमर्स आते हैं इस इंडस्ट्री से नहीं है उन्हें मौका नहीं मिलता है। इस बात से आप कितना सहमत हैं, और कभी आपने ऐसा महसूस किया फील्ड में कभी काम करते हुए? आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने महसूस किया? यहाँ पे देखिए, एक इंडस्ट्री में एक अच्छी बात है, अगर आपके पास टैलेंट है तो आज नहीं तो कल वो दिख ही जाता है, सबको दिख जाता है, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। अब कल को अगर कोई चलता सड़क पे बोलने लगा मेरे अंदर टैलेंट है लेकिन मुझे काम नहीं मिला, ऐसा नहीं होता, काम ज़रूर मिलता है, देर सवेर ज़रूर होती है, लेकिन अगर आपके अंदर वर्थ है तो कोई रोक नहीं सकता। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वेब सीरीज़ हो रहा है, ये हो रही है, फिल्में हो रही हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। यूट्यूब पे आप अपनी परफॉर्मेंस डाल देते हैं, अगर उसमें से कोई क्लिक हो जाता है तो डेफिनेटली आपको बुलाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारे साथ जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमें नहीं लिया जा रहा है, ये तो सिर्फ स्टार के बेटे ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो उसके अलावा बहुत सारे जो बहुत सारे एक्टर की लौट आई है, बहुत सारे एक्टर्स काम कर रहे हैं, वेब सीरीज़ में भी काम कर रहे हैं, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वर्थ है, उनके पास टैलेंट है, इसलिए तो कर रहे हैं। और जिसके पास नहीं है तो नहीं है। अब वो भी बोले कि मुझे नहीं मिल रहा, मिल जाएगा, जब आपके अंदर अगर होगा तो मिलेगा, ज़रूर मिलता है। नवाज जी, जैसे हम देख रहे हैं आपने कल वोट दिया हुआ है और अभी भी वोटिंग बाकी है पूरे देश में होना कई जगहों पर, क्या कहेंगे किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट किया है, और ऑडियंसेस को और अपने फैंस को क्या कहेंगे किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो वोट करें? मुद्दे हमेशा वही होते हैं जो एक डेवलपमेंट होता है, एक प्रोग्रेस होती है। हम हर आदमी चाहता है कि हमारी कंट्री की प्रोग्रेस हो और एक माहौल अच्छा रहे, क्योंकि हम अगर देश को स्ट्रॉन्ग बनाना है वो सब साथ में मिलके ही बना सकते हैं, है ना। तो हर आदमी सपना देखता है और कर रहे हैं सब लोग, और सब मिल के काम कर रहे हैं, और मैं यही चाहता हूँ, हर आदमी यही चाहता है। मैं क्या, हर आदमी चाहता है कि हमारा देश स्ट्रॉन्ग हो, ग्रेट हो, और उसी के लिए सरकार चुनी जाती है। ये जो लोकसभा चुनाव है इसी से हमारा प्रधानमंत्री चुना जाएगा, आपको कैसा चाहिए और आपकी क्या उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री? मैडम, इतने पॉलिटिक्स के आप सवाल कर रहे हैं, मैं मेरी तरफ से जो भी हो अच्छे तरीके से लेके चले। जैसा कि हर एक आपने वोट किया वो आपका राइट है, तो प्रधानमंत्री भी आपको Thank you so much.